Number 9, integral 2x square plus e to the power x dx. Now यहां पे क्या होगा, अगेन हम अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रल 2x square dx प्लस इंटीग्रल e to the power x dx. यहां पे 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटीग्रल x square dx. Now integral e to the power x dx is e to the power x, and let's say इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c1. यहां पे 2 इंटीग्रल, now इंटीग्रल x square dx इस फॉर्मूला के हिसाब से होगा, so x to the power 2 plus 1 by 2 plus 1, that is x cube by 3. Let's say इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c2. So हमारा फाइनल रिजल्ट होगा 2/3 x cube प्लस e to the power x. c2 और c1 दोनों को जोड़ करके हम एक फाइनल इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे सकते हैं, लेट्स से c. So this is the answer.